Go
जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जगद्गुरु जय श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद परम कृपालु श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जगद्गुरु जय श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। वंदो मोहि सावधान माते वंदो मोहि सावधान माते। याहर प्रसादे भाई ए भवतरिया याहर प्रसादे भाई ए भवतरिया
कृष्ण प्राप्ति हो यहाँ होते कृष्ण प्राप्ति हो यहाँ होते गुरुमुख पद्मा वाक्य चिते ते करिया क्या आर ना करी मने आशा आर ना करी मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसादे पूरे सर्व आशा ये प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिल जय जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिल जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश याते प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश याते वेदेगा यहाँ चरिता वेदेगा यहाँ चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकेनाथ लोकेर जीवना लोकेनाथ लोकेर जीवना श्रील प्रभुपाद लोकेर जीवना हा हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया हा हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया हा हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया एबे यश घुषुक त्रिभुवना एबे यश घुषुक त्रिभुवना
प्रभुपाद पतित पावन जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमः बोलो बोलो नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna। बोलिए बोलिए सभी लोग बोलिए हरि बोल। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए बोलिए हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Hari Bol बोलिए बोलिए Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Hari Bol Gaura Hari Bol Hare Krishna सभी लोग बोलिए कृपा करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बोलिए सभी लोग बोलिए हरि बोल कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार हरि बोल कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 सभी लोग बोलिए कृपा करके राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
हरे हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Prabhupada 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 Srila Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura Hari Bol Srila Prabhupada ki jai. Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Ashtottara Sata Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Didas Thakur ki jai. Prem se kava Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Swasati Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Sri Vrindavan Dham ki jai. Sri Mathura Dham ki jai. Mayapur Navadip Dham ki jai. Ganga Yamuna Maya ki jai. Bhakti Devi Tulasi Devi ki jai. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. पंखा को कम करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Everybody is fine? सगड़ा बड़ा है? Very nice. So many brahmacharis missing. Or they got tired.
from doing kirtan, huh? They were dancing with you? Oh, I thought they must be tired. Because when you sweat out, then you like to take a cool breeze. श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रजजानरंजन। यशोदनंदन व्रजजानरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रजजानरंजन। यशोदनंदन व्रजजानरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी।
Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Gopi Janavallabha Girivardhari. Jai Gopi Janavallabha Girivardhari. Yashodanandana Brajajanaranjana. Yashodanandana Brajajanaranjana. Yashodanandana Brajajanaranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Gopi Janavallabha Girivardhari. Yashodanandana Brajajanaranjana. Yashodanandana Brajajanaranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Everybody Haribo. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Everybody. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare.
Jai Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe. Jai Gauranita 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 Jai Gauranita. Prabhupada, 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 Gurudev. Jai Jai Prabhupada, 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 Gurudev. Jai Vishnupada Paramahansa Pracharya Stotra Sat, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Bibbidi Founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya, our Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhar, Shivas Adi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath, Radha Kunshang Kungiri Govardhana Ki Jai. Vrindavan Dhama Ki Jai, Mathura Dhama Ki Jai, Dwarka Dhama Ki Jai, Ramesha Badrinath Dhama Ki Jai, Jagannath Puri Dhama Ki Jai, Jagannath Baladev Subhadra Maya Ki Jai, Mayapur Navadip Dhama Ki Jai, Ganga Mai Jamna Mai Ki Jai, Vrindadev Tulsi Maharani Ki Jai, Ananta Kodi Vaishnava Vrinda Ki Jai, Shri Shri Radha Madan Mohan Ji Ki Jai, Shri Shri Nitai Gaur Sundar Bhagavan Ki Jai, Srila Prabhupada Transcendental Book Distribution Ki Jai, Srila Prabhupada Transcendental Prasad Vitran Program Ki Jai, Harinam Sankirtan Ki Jai, ISKCON Kharghar Ki Jai, ISKCON Kharghar Bhakta Vrinda Ki Jai, and all glories to the assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories Shri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This morning we are hearing from Srimad Bhagavatam, canto number 7, chapter number 10, and the verse is 11. Shri Bhagavanu Vacha Nekantino Me Mai Jato Yahasisa Asasate Amudra Amutra Chay Bhavat Vidha Tathapi Manavantaram Etad Atra Daiteshwaranam Anabhuksava Bhogan. Shri Bhagavanu Vacha Naikantino me mai jatvi yahasisa Asati mutra chaye bhavat vidham Tathapi manavantaram etadatra Daiteshwaranam anubhungshvabhogam. Shri Bhagavanu Vacha Naikantino me mai jatvi asisa Asasate amut
अमुत्र च ये भवद्विदाम् तथापि मनवन्तरम् एतदत्र दैतेश्वराणाम् अनुभुङ्क्ष्व भोगान् श्रीभगवानुवाच नैकान्तिनो मे मयि जात्विहासि सा आससते अमुत्र च ये भवद्विधाम् तथापि मनवन्तरम् एतदत्र दैतेश्वराणाम् अनुभुङ्क्ष्व भोगान्
Mothers, word-to-word translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Shri Bhagavanu Vacha. The Supreme Personality of Godhead said, Na, not, ekantina, unalloyed, without desires, except for the one desire for devotional service. Me, from, me, mai, unto me. Jato, anytime. Yaha, within this material world. Asisa, benedictions. Asatsate, intent desire. Amutra, in the next life. Cha, and ye, all such devotees who bhavat vidham, like you, tathapi, still, manvantaram, the duration of time until the end of the life of one Manu. Etad, this, atra, within this material world, Daita Ishwaranam, of the opulences of materialistic persons, Anubhukshava, you can enjoy Bhogan, all material opulences. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The Supreme Personality of Godhead said, My dear Prahlad, a devotee like you never desires any kind of material opulences either in this life or in the next. Nonetheless, I order you to enjoy the opulences of the demons in this material world, acting as their king until the end of the duration of time occupied by Manu. Kindly repeat after me. The Supreme Personality of Godhead said, My dear Prahlad, a devotee like you never desires any kind of material opulences, either in this life or in the next. Nonetheless, I order you to enjoy the opulences of the demons in this material world, acting as their king until the end of the duration of time occupied by Manu. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. One Manu lives for the duration of time calculated to be an aggregate of 71 yugas.
yuga cycles, each of which equals to 43 lakhs of years. Although atheistic men like to enjoy material opulence and they endeavored with great energy to build big residences, roads, cities and factories, unfortunately they cannot live more than 80, 90 or at the most 100 years. Although the materialistic exerts so much energy to create a kingdom of hallucination, he is unable to enjoy it for more than few years. However, because Prahlad Maharaj was a devotee, the Lord allowed him to enjoy material opulence as the king of materialists. Prahlad Maharaj had taken birth in the family of Hiranyakashipu, who was the topmost materialist. And since Prahlad was the bona fide heir of the father, the Supreme Lord allowed him to enjoy the kingdom created by his father for so many years that no materialistic could calculate them. A devotee does not have to desire material opulence, but if he is pure devotee, there is ample opportunity for him to enjoy material happiness also, without personal endeavor. Therefore, everyone is advised to take to devotional service under all circumstances. If one desires material opulence, he can also become a pure devotee and his desires will be fulfilled. It is stated in the Srimad Bhagavatam, canto number 2, chapter number 3, verse number 10, Akama sarva kamo va moksha kama udharadhi tivrena bhakti yogena yajet purusham param. Whether one desires everything or nothing, or whether he desires to merge into the existence of the Lord, he is intelligent only if he worships Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, by rendering transcendental loving service. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurulmitam yenai tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami iti namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyati Deshitarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namo Mahabhadanyaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauratuse Namah. Namo Brahmana Devaya Go Brahmahitaya Cha Jagatitaya Krishnaya Govindaya Namo Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vanchakalpadrubhyasya kripa sindhubevacha Patidhanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. Thank you very much for coming to the Srimad Bhagavatam. As we are approaching Narsingh Chaturthi on
4th of May. It's very nice for us to focus on these wonderful prayers by Prahlad Maharaj. Rather, read this complete chapter when you have a time like today, tomorrow, till we be celebrating Narsingh Chaturthi. So, this shloka is sung by who? Who is Narsingh Bhagwan? Very nice. So, you can see how Bhagavan Narsingh Dev is blessing him. But before he blesses, we have got 2-3 shlokas, prayers sung by Prahlad Maharaj. So we must absorb in those prayers also. So, here the shloka number 8 in the same verse, where Prahlad Maharaj is offering the prayers. Indriyani mana prana atma dharmo dhritirmati Shri Shri Tejas Smriti Satyam Yasya Nasyanti Janmana. O my Lord, because of lusty desires, from the very beginning of one's birth, the functions of one's senses, mind, life, body, religion, patience, intelligence, shyness, opulence, strength, memory and truthfulness are vanquished. केवल काम प्रवृत्ति के अंतर्गत हमारे जीवन में जो भी अच्छाइयां हैं वो लुप्त हो जाती हैं. This is very important shloka. And who is reciting this? Prahlad Maharaj, the Mahajan. The problem with us is that even if we commit most abominable situations also in our life, we think, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो हो गया. But here Prahlad Maharaj is admitting the impediments in the progress of devotional service, and these are all very, very predominant in every of us. So what to do? Rameshwar Gauranga Prabhu. What to do? So Srila Prabhupada is giving us, rather Krishna is giving us the solution. Krishna is claimed, Krishna claims in the Bhagavad Gita. Krishna means Purushottama. Huh? And the Gita is coming from him. We are supposed to meditate on that. The words of the Supreme Personality of Godhead. But unfortunately, we have no taste left for reading Bhagavad Gita. That's why we cannot understand the will of the Lord, and we cannot practice the will of the Lord, and we cannot execute the will of the Lord. When we have to execute, when we want to own a small pigeon house home, we have to execute agreement.
with the builders. And we are so puffed up and we are so active at the time. So, मैं घर ले रहा हूं, मेरे को आज रजिस्ट्रेशन करना है. अरे थोड़ा थोड़ा वेट करो ना, थोड़ा वेट करो. नहीं नहीं प्रभु जी, मैं I have to do my this thing. See the intensity of your lording over a material thing which is very, very little, and yet you are so rushing. But when we have got so much of impediments within us, our lives, how much we must rush to eradicate those things, if at all we want to encounter the Supreme Personality of Godhead. So Prabhupada ji is talking here. Rather, Bhagavatam is telling Kaman Hridaya Rogam. Mahamurti Das, Kaman Hridaya Rogam. These lusty desires are the disease of this heart. And devotee becomes very dedicated in removing these Hridaya Rogam if he wants to become a devotee in his life. For a materialistic, it doesn't matter. But an aspiring devotee, he wants to serve the Lord, he must remove this Hridaya Rogam. आर्टरी खराब है तो डॉक्टर उसको ठीक कर देगा, मगर दिस हृदय रोगम cannot be operated by materialistic doctor. This hridaya rogam can be only operated by a transcendentalist, which we'll be talking at the end of the Pravachan. Okay? It's only he who can remove your, hridaya rogam. Prabhupada ji very categorically speaks that materialistic life means that we are having lusty desire. भौतिक जगत में हमारा आवरण का रीजन ही क्या है कि हमारे हृदय में काम वासना छुपी हुई है. इसलिए हम जगत में आते हैं, कभी कीट, कभी पतंगा, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी शेर तो गधा, कभी पंक्षी तो कभी सांप. नाना प्रकार के जीवनों में आते हैं हम, ताकि हम इस दुर्बल हृदय की कामनाओं को विभिन्न योनियों में सेटिस्फाई कर सके. मगर हे जीव, अब तुम इस जीवन में, मनुष्य जीवन में आए हो, अगर कुछ किंचित मात्र थोड़ा से भी उसमें पड़ा हुआ है, इस हृदय रोग को निकालने के लिए भगवान तुमको सभी यत्न कर रहा है. वो खुद आता है और गीता बोल के चला जाता है. और जब तक हम इस गीता का अध्ययन सदैव नहीं करेंगे तो हमारी ये हृदय की दुर्बलता दूर नहीं हो सकती, ये कामनाएं दूर नहीं हो सकती. हम गर्व से कहते हैं कि हम बड़े हिंदू हैं, मगर इन सब दुर्बल आत्माओं को पूछिए कि आप कितनी बार भागवत गीता पढ़ते हो. जो धर्म के नाम पे हत्या करते हैं, धर्म के नाम पे लूट मार करते हैं, उनसे पूछिए कि आप इस हृदय को साफ करने के लिए क्या कर रहे हैं. ये छोटे से संसार में असंख्य जीवों की दुर्बलता को लेके भगवान बारंबार आते हैं और उन्हें प्रेरणा देते हैं कि आप
इस दिव्यवाणी को सदैव पढ़ें, याद करें और अपने मन के, अपने हृदय के दुर्बलताओं को दूर कर सकते हैं। Prabhupada ji says, liberation means freedom for lusty desires. Liberation means, yeah, मोक्ष ऐसे ही नहीं मिलता है भाई। ये मत सोचिए कि योग के कुछ आसन कर दोगे तो तुमको मोक्ष मिल जाएगा, या किसी देवी देवता को भी पूजेंगे तो तुमको मोक्ष मिलेगा। हाँ? Rest be assured that these so-called process of puja, pratishtha, labh, vagra is going to remove your hridaya rogam. The only remedy to take to devotional service, which begins one is free from all material desires. जब आप असली भक्ति की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके हृदय रोग जो है मिट जाना चाहिए। हृदय रोग में क्या है? ये भौतिक वासनाएं, भौतिक इच्छाओं को निखारना होगा, तब जाके हम असली डिवोशनल सर्विस कर सकते हैं। Then Prabhupada ji says that the spiritual soul has spiritual activities and spiritual desires. And described by Sri Chaitanya Mahaprabhu, Janmani Janmani Ishwari Bhavtat Bhakti. केवल भक्ति द्वारा चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात भगवान कहते हैं कि इस हृदय दुर्बलता को भक्ति के द्वारा ही निकाला जा सकता। Then Prabhupada ji, then Prahlad Maharaj says, without giving up your material connections, you cannot connect yourself with Krishna. सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। जिस दिन तुम्हारे जीवन में ये सर्व उपाधि का क्षय होगा, तब जाके आप पवित्र होके भगवत भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। So then Prahlad Maharaj is saying, oh my Lord, when a human being is able to give up all material desires, देखिए महाजन क्या बता रहे हैं हमको, जब जीव अपने अंदर भौतिक वासनाओं को खत्म करेगा, he becomes eligible to possess wealth and opulence like yours. तब जाके भगवान ऐसे व्यक्ति को आप जैसा वैभव प्राप्त हो सकता है। There's going to be a deep meaning to it. एक तो वो आप जैसा बन जाता है और वो आप जैसा ऑपुलेंस उसको मिल जाता है। ओके, ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुतास्य महाय Brahmane Paramatmane. This is a very beautiful shloka of this coming from the mouth of Prahlad Maharaj. Oh my Lord, full of 6 opulences. Bhagavan जो है षड ऐश्वर्य पूर्ण है। O Supreme Person, O Super Soul, killer of all miseries. संसार में जीवों के पास कितनी कुंठाएं हैं, अगर उसको खत्म करना है तो भगवान के चरणारविंद में समर्पित होना होगा, तभी जाके आपके सभी प्रॉब्लम्स मिट सकते हैं। O Supreme Person in the form of wonderful lion and man,
नरसिंह भगवान का रूप क्या है? आधा शेर का और आधा मनुष्य का, क्योंकि दो हाथ नरसिंह भगवान के शेर के पंजे जैसे हैं, और भगवान का जो मुख है चंद्र क्या है? शेर जैसा है, और जो ये धड़ से जो नीचे है वो मनुष्य जैसा है। let me offer my obeisances unto you. भगवान का भक्त भगवान के इस अद्भुत दर्शन का लाभ ले रहा है और उनके समक्ष अपने हृदय की प्रार्थनाओं को गा रहा है। और हमें बड़ा चांस मिल रहा है कि भगवत भक्त के महाजन के मुखारबिंद से ऐसी प्रार्थना का रसास्वादन कर रहे हैं जो हमारे कल्याण के लिए, हमारे जीवन के कल्याण के लिए ऐसा कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज तो सुंदर भक्त हैं ही, और भगवान भी ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं दूसरे श्लोक में, क्या? तुम जैसा भक्त जो है इस जीवन में भी और नेक्स्ट जीवन में भी भौतिक इच्छाएं नहीं करता है। A devotee like Prahlad Maharaj never desires to have materialistic desires. He wants to serve the Lord life after life after life all the time. That is why, my dear friends, we can see that the Lord has manifested in front of Prahlad Maharaj. And he is now saying, what? Sri Bhagavan Uvacha Naikantino me mai jatma ihasisa asasate mutra cha bhavet vidha tathapi manvantaram etadatra daiteshwaranam anubuksha bhogam. Now Bhagavan is also telling Prahlad Maharaj, यार तुम तो असुरों के श्रेष्ठ हो, असुरों के श्रेष्ठ हो, because his father had a great opulence. He had got all the benedictions from Brahma, everybody. Even the demigods were terrified with him, and he could even take the position of an Indra also. But here he is saying that you are very different. What is he saying? Naikantino me mai jatva ishase asasate amutrache bhavatvidha tapthapi manvantaram etadatra. मनमंत्र, मनमंत्र का मतलब मालूम? बताऊं क्या? बताऊं क्या भाई? क्या बताऊं मैं क्या क्या बताऊं? You see, one manmantra means almost about 3,53 lakhs of years. ध्यान से सुनो भाई, सीमित बुद्धि वालों, असीम संख्या में अपने आप को पारंगत करो। 30 crores 53 lakhs. It's called one mantra, and Krishna Narsingha Bhagavan is benedicting him that you can enjoy your opulence.
ये खोटा सौदा है क्या? भक्ति खोटा सौदा है क्या? अरे बताओ ना भाई, मर रहे हो उधर गली कोचे में, भगवान बोल रहा तुम मेरा भक्ति कर, तुमको मैं राजा बना दूंगा। तुम्हारी बुद्धि इतनी सीमित है कि वड़ा पाव के गटर में गिर रहा है तू। तुम्हारी बुद्धि इतनी सीमित है, तुम सिगरेट पी के जीवन निकालना चाहते हो। तुम्हारी बुद्धि इतनी सीमित है, एक पौवा पी के जिंदगी को बिगाड़ रहे हो। हाँ, नहीं, ध्यान से सुनो। This is the practicality of this material world, how people are spoiling their lives. And they're not listening the proposal coming from Krishna himself that you do my bhakti, I will give you my opulence. Isn't it? So here we can see that Prabhupada ji is giving us something very, very important. What is that? He is first of all focusing us the duration of this manmantra, the benediction time of the Lord. Is that 33 करोड़ साल तक तुम मजा कर ले। क्यों? क्योंकि तुम असली दैत्यराज हो, असली दैत्यराज के बेटे हो. So now you enjoy this opulence because he is not affected by the materialistic things in his life. Because we have already seen that Prahlad Maharaj has rejected the proposal of giving him he is asking him what benedictions you want. And he says, sir, I'm not interested in these material transactions because I am not a businessman and I don't want to barter with you as a businessman. I am your servant. Whether you keep me or whether you finish me, I'm yours. Under these circumstances, Krishna is getting this very clearly from his devotee. And now, Bhagavan is giving him all the opulence. So, Prabhupada ji says in the purport, whether he is an impersonalist or a materialist or karmi, if he aspires to do devotional service, his life is very successful. His life is very successful. And Prabhupada ji says, Bhakti Yoga means all perfection. In the Srimad Bhagavatam, canto number 2, the last shloka which it is mentioned here, you see, akamo sarva kamo va moksha kam udharadi tivrena bhakti yogena yajita purusham param. This is the verse from Bhakti Yoga, devotional service, which Sukdev Goswami Maharaj is narrating to who? Parikshit Maharaj. भक्ति के संदर्भ में राजा सुखदेव गोस्वामी महाराज के मुखारबिंद से उसकी महानता सुन रहा है. इसी का रेफरेंस यहां पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं. और उसमें क्या लिखा हुआ? भक्ति योगा मीन्स ऑल परफेक्शन. Bhakti Yoga is the goal of karmis, jnanis and yogis. Because everything culminates at Bhakti Yoga. And Bhakti Yoga can only connect you with Krishna.
Karmi, Jnani and other things, they have to come to this level. If they want to connect themselves to Krishna, then everybody must take to the process of Bhakti Yoga. This process has been simplified by Lord Chaitanya Mahaprabhu himself. Harinama, Harinama, Harinama eva kevalam klo nasteva nasteva gatiranatha. Teisham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mamupayantate. But we are so cocoonish. The moment we chant the holy name of the Lord, we think that, oh, we have achieved something. We become pride. We become proud. So here it is said that especially this chapter of the Bhagavatam, that even if you are a demigod worshipper, you have to understand that Bhakti Yoga is the prime benediction on the mankind, and you have to execute devotional service unto the Supreme Personality of Godhead. And then, what does it mean, akama? One who has no material desires. To come to that level, akama, you have to take some medicine, isn't it? And Lord Chaitanya Mahaprabhu knows the disease of this materialistic people, and that's why he is profusely himself distributing this holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. इस मंत्र को जपने से, इस भागवत को अध्ययन करने से, इस भागवतम को सुनने से तुम्हारे जितने भी कामनाएं हैं वो अकाम में परिवर्तित हो जाएंगे. उसका तुम्हें एहसास भी नहीं है कि तेरे ऊपर ऐसा प्रहार हो रहा है जिससे तुम्हारे अशुद्ध प्रवृत्तियां भस्म हो रही हैं. ये इस भक्ति सूत्र का प्रभाव है, इस भक्ति का प्रभाव है. केवल करने मात्र से ही तुम्हारा जीवन का कल्याण होगा. बस करते रहो, and do it very sincerely. Then it's our constitutional provision. Prabhupada ji says, ये हमारा constitutional position है. हम जानते नहीं हैं. जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर दास. ये उंगली किसका अंग है? असंगा तुमी साहिब, tell me, this finger is part of what? Part of the body. Okay? This head is part of the body. This arm is the part of the body. And all the living entities are part and parcel of the Supreme Personality of Godhead. What is the beauty of this hand if it is not rubbing the body early in the morning, doing some seva? The same Prabhupada is saying that our constitutional position is that we are servant of Krishna. But what are we doing? We are becoming servant of Maya. Maya Das, Sadau Das. Krishna Das, Bindas. Isn't it? कसा करना, कसा बोलना, माहिती नहीं. चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कसा बोलना, केवल you glorify Krishna. Huh? Only keep on chanting the holy name of the Lord. Tukaram is saying, सेवा करा तुम्ही, तुमच्या बुद्धी सपाट झाला. कसा? केवल भक्ति मात्र. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. And then what does it say? That this is a very natural thing for हमारे जीवन के लिए. ये स्वभाव बन जाना चाहिए कि हमें केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए और अन्यथा हमें कुछ करना नहीं है.
इस जीव मनुष्य जीवन में और कुछ करना नहीं है, केवल हमें शुद्ध भक्ति करनी है, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। मकान भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगा, बंगला भी मिलेगा, मगर हे ध्रुत, तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भक्ति में, बाकी सब चीजों में भक्ति आसक्ति है। The moment Prabhupada is saying desireless means therefore not to be inert like a stone. Okay? But to be conscious of one's actual position. See how Srila Prabhupada is articulating his sentences so beautifully. Thus desire, satisfaction only comes from the Supreme Personality of Godhead. Only He can fulfill your all desires. And Srila Jiva Goswami Maharaj has explained this desirelessness as Bhajaniya Parma Purusha Sukha Matra Swasukhatram in his Sandarbha. This means that one should feel happy only by experiencing the happiness of Supreme Lord. When the child is in the lap of mother, by the spatial sparsha of a mother, he gets consoled. His propensities of crying and everything gets completely subdued by simply when the mother says some words to the child. Likewise, when we are in the service of the Supreme Personality of Godhead, our all types of crying get diminished, all types of diseases get diminished, and all types of frustration get completely diminished the moment we execute devotional service. Srila Prabhupada furthermore explains in that verse, this institution of living being is sometimes manifested even during the conditioned stage of living beings in the material world. Then such initiation is expressed in the manner of altruism, philanthropy, secularism, communism, etc., etc., etc. By the, undeviated mind of less intelligent people. Those who enter into these things, they're all denoted as less intelligent people because they are trying to take little happiness by doing this type of work because they don't know what they can get by doing devotional service. Harinama, 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 Kevalam, chanting the Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This holy name of the Lord can give you the bliss of ultimate life. But you are so bereft because you are becoming addicted to something very, very inferior. And when you are addicted to something inferior, you have no understanding of what is transcendental bliss, which comes by executing devotional service. In the mundane world, such as outlook of doing good to others in the form of society, community, family, country, or humanity is a partial manifestation of the same original feeling in which pure living entity feels happiness by the happiness of the Supreme Lord. एक किंचित मात्र थोड़ी सी हैप्पीनेस ऐसी सेवाओं करने से प्राप्त होती है, मगर वो सब इसी का अंग है। और हम उस होल से, उस सुप्रीम से, उस पुरुषोत्तम से इग्नोरेंट है। But when you execute devotional service, you get bliss. Prabhupada ji says, this bliss, that service, this devotional service
was executed in optimum degree by the damsels of Vrindavan, and that's why they were always feeling the bliss of Krishna consciousness, and they didn't want to have anything else. That's why they gave up sarva upadhi vinirmuktam. They didn't want to do anything. They only wanted to serve the Supreme Personality of Godhead. And Krishna says that I am sold out by your pure devotional service. So when we try to execute our devotional service, my dear friends, we get slowly purified, and we also, can taste the bliss of Krishna consciousness as and when our materialistic desires get vanquished. And as long as you are relating in devotional service, whatever you are doing in your devotional service, you will see that you will get a satisfaction. You will get some special mercy of the Lord. Then Bhakti Yoga may be perfectly administrated without the mixture of karma and jnana. As the unmixed Surya, sun rays, are very powerful. Likewise, when you execute Bhakti Yoga without aspiring for all these things, just like Prahlad Maharaj, he aspired for pure devotional service. But when he executed pure devotional service, भगवान तो मिल ही गए, मगर पिताजी का सबसे बड़ा राज भी उनको भगवान ने दे दिया भाई. Isn't it? भगवान भी मिल गए और संपदा भी मिल गई भोग करने के लिए. मगर भक्त का हृदय क्या है? वो भोग विलास में नहीं पड़ता है. कई बार मैंने आप सबको बताया है, श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उनको छोड़ने के लिए एक शिष्य भी नहीं था. जब वो लौटे तो वो शिष्यों को साथ आ गए. उनके पास में एक टीने वाला बैग था. उन्होंने शुरुआत किया पेड़ के नीचे नाम संकीर्तन करना. सब खत्म हो चुका था. उनकी फैक्ट्रियां, उनका वो ये सब एवरीथिंग वाज फिनिश्ड. बट देन व्हाट हैपेंस? भगवान इज गिविंग all the disciples. Bhagavan is giving all the opulence. And Bhagavan is giving, the Krishna is giving him the same very rich disciples also. George Harrison says that, Prabhupada, मेरा 125 एकड़ वाला रेंच आप ले लीजिए. प्रभुपाद जी बोल रहे, अरे जॉर्ज, मैं 125 एकड़ वाला इस मकान को क्या कर लूंगा? हाँ, मेरे को आइडिया है, हम इसको मंदिर बना देंगे. हाँ, हम इसको मंदिर बना देंगे. मेरे ये सब मिट्टी गारा छोड़ के तो मैं आया हूं, मगर इस मिट्टी गारे को मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा. जो तुम्हारा घर है वो उसको मैं भगवान का घर बना दूंगा. जब शुद्ध भक्ति आती है तो भगवान को हम मांगते नहीं हैं, भगवान हमें खुद देने के लिए आ जाता है. तो आज भी वो इतना बड़ा विद्यमान है. आज भी न्यू वृंदावन गोल्ड से बना हुआ है. शिष्यों ने सब कुछ अर्पित कर दिया प्रभुपाद जी को. और कौन ऐसा गुरु है जो इस ऑपलेंस से निर्लिप्त होते हुए भी अपनी चेतना में कृष्ण को सदैव रखते हैं? ये केवल महाजन ही हो सकता है. इसलिए प्रभुपाद जी, बाहर में महाजन, 12 महाजन तो हैं, हमने इस कलयुग में 13वें महाजन को भी देख लिया.
इस कलयुग में अगर देखना है तो 13वें महाजन को देखिए, जिन्होंने निर्लिप्त होते हुए भक्ति के उत्तम स्थिति को प्राप्त करते हुए सब कुछ भगवान की कीर्ति को इस तरीके से फैला दिया। तलातल रसातल सब जितने भी हैं, साइंटिफिकली प्रूव करना चाहते हैं, अमेरिका नीचे है, इंडिया ऊपर है, किसी भी तरीके से यू सी हाउ ही इज बिकमिंग ऑपुलेंट एंड ही इज नॉट कीपिंग एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ. This is the true representative of a Krishna. And when you become a true representative of the Krishna, Krishna will provide you everything. But there was a materialistic guru also. I often give the example of a materialistic guru. Rajneesh. His disciples gave him 100 Rolls Royce. तो किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा, आप इस 100 रोल्स रॉयस को क्या करोगे? तो वो क्या बोल रहे हैं, मेरे शिष्य दे रहे हैं, मैं क्यों ना बैठूं हर दिन एक गाड़ी में. आपको मालूम कि नहीं? दिस इज हिज स्टेटमेंट. बट कुड ही मेक वन टेंपल? He could have 100 Rolls Royce for him, but he could not make one temple where he could install the Supreme Personality of Godhead, where people could come and worship and talk to the Supreme Lord. And that is the difference between a materialistic guru and a spiritual guru who is coming in the parampara. The great iconic temples all over the world are coming from the great acharyas. You go to Sri Rangam. Who has made that temple? Ramanujacharya. It's equal like a Vaikuntha. And after 1,000 years also he is alive in the hearts of the devotees. That's devotion. Madhvacharya, 800 years back, unlimited disciples, unlimited devotees. Who is that? Srila Prabhupada. Thousands of devotees, millions of devotees, thousands of temples all over the globe, and nothing for him. International Society for Krishna Consciousness. If you don't have the brains to understand, discriminate between good and bad, best and excellent, Guru and Guru, then you are a foolish number one. This human life, you have got it. You have to surrender to a real Guru so that he can take you back home, back to Godhead. And if he puts you in the process of this devotional service, that will make you successful in your life, in all your endeavors. Whether you have karma or you are without karma, it will get transformed, because your heart will not say, "Ye dil mange more." They will say, "I want Krishna more, I want Krishna more, I want chanting more." And then he will give you opulence also, but utilize that opulence in the service of Krishna. That is the success of your spiritual life. What is the success of spiritual life? What is the success of a human life? Whatever endeavors you are putting in this material world, are you able to offer the results of your karma to Krishna? You can offer it to your son, you can offer to your wife, you can offer to your grandchildren. Is that going to be the perfection of your life? It will be within 1 or 2 generations, it will be finished. As it is evident from the scholarly people that you see who gets a big opulence, it is within 3 generations, everything is finished. It doesn't even pass on to this 3rd generation or a 2nd generation. The 2nd generation starts fighting. ये मेरा पैसा है, ये मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा business है. Divide, divide and divide. But the transcendental opulence which comes by executing devotional service, it is increasing and increasing and increasing. Yes or no? It snowballs. And materialistic life is just like a, salt rock. You put it in the water, in due course of a time, it's going to completely vanish. And spiritual life means it's all
increasing, increasing and increasing. So that's what it is said. And after this shloka of the Bhagavatam, canto number 10, verse number, this one, which after this shloka, akam sarva kamo va moksha kamo udharadhi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. Sukdev Goswami Maharaj is giving one beautiful shloka. What is that? Let us hear. Etvan eva yajatam yaha nihishriya sodaya bhagavati achala bhavo yad bhagavata sangata. How you will come to this level? What level? Previous shloka, this shloka. Akama sarva kamo va moksha va udhar. How you will come to this stage? Sukdev Goswami Maharaj is telling to Parikshit Maharaj. What? Etavan eva yajatam yaha nihishriya sodaya bhagavati achalo bhavo yad bhagavata sangata. Yah bhagavata sangata. Associating with such devotees can give you this heart where you will have no desirelessness. And what is it? All the different kinds of worshippers of multi-demigods can attain the highest perfectional benediction, which is spontaneous attraction influencing mixed upon the Supreme Personality of Godhead, only by the association of pure devotee of the Lord. अगर आप डेमी गॉड वर्शिपर भी हो, अगर शुद्ध भक्त के संग में आ जाओगे तो उसके संग में आपका ढंग जो है बदलता रहेगा, बदलता रहेगा। इसलिए संतों के आगोश में रहते हुए उनके मुखारबिंद से सुनने का ललासा पैदा करो भाई। बॉलीवुड का नहीं सुनने का, टेलीविजन का नहीं सुनने का, अपने जीवन को परास्त कर दोगे। अमीविलास स्वामी महाराज को अपने घर में बुलाइए सत्संग करने के लिए। तुम दंडदारी बन नहीं सकते। तुम्हारे जीवन में अभी भी बच्चों की ललासा, पत्नी की ललासा, बिजनेस की ललासा, उसकी ललासा, इसकी ललासा। मगर अमीविलास स्वामी महाराज सन्यासी है, यहाँ के रेजिडेंट सन्यासी है, उनको अपने घर में बुला के वैराग्य का थोड़ा सा प्रसाद चख ले भाई। And when you will sit with him, what you will do? You will not ask him, Maharaj, मेरा बिजनेस का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा? What will happen? मच्चिता. What will happen? जरा जोर से बोलिए श्लोका। जब ऐसे संतों के साथ में बैठोगे तो आपको पूछोगे, महाराज मेरे को बताइए मैं कैसे भक्ति करूं, जप कैसे करूं, मेरा ध्यान भटक रहा है, वो मास्टर मेरे को मार रहा है, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर ये प्रहलाद महाराज का सुंदर प्रस्तावना और फिर भगवान का उनके साथ में ये आशीर्वाद प्राप्त करना, ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। और हमें आशा है कि आप भी ऐसे भक्त बने जैसे प्रहलाद महाराज हैं। हाँ, ऐसे भक्त बने जैसे कि आपके गुरु महाराज हैं। ऐसे भक्त बने जो आप भी सुंदर तरीके से इस जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। Any questions or any comments, please? Yes, Prabhu, please. Last Sunday was nice class by you. पिछले संडे में उसमें प्रहलाद महाराज was mentioning
Yeah. तो प्रहलाद महाराज was saying, अगर मैं वर मांगू तो मैं अच्छा भक्त नहीं हूँ, अगर वर तुम दिया तुम अच्छा प्रभु नहीं हो, ऐसा बोला। अब ये हफ्ते में अभी प्रभु जी ने पूरा दिया। Because Krishna is Antaryami. He is the Supreme Personality of Godhead. He knows whether my devotee is cheating with me, he is lying with me, or he is really saying true what he. अभी क्या होता है कि हम लोग प्रसाद खाने के टाइम पे कुछ बोलते हैं, चपाती खत्म हो जाती है तो फिर कुछ बोलते हैं, जब डिवोशनल सर्विस करना चाहते हैं उस वक्त कुछ बोलते हैं, जब पैसा देने के लिए बारी आती है उस वक्त बोलते हैं अरे ये लोग हरे कृष्ण वाले तो पैसा ही मांग रहे हैं। तो ऐसी विडंबनाओं के अंतर्गत हम भगवान के शुद्ध भक्त कैसे बन सके? मगर यहां पर भगवान जान गए कि वास्तविकता में ये जो प्रहलाद महाराज है उसको मेरे से ही मतलब है, मेरी ऑपलन से मतलब नहीं है। When Krishna comes to know that my devotee is going to utilize his opulence for kirti, yash and prachar, then he gives you more. He gives you more. It is just like a schoolboy at a school level. When he becomes excellent in the school, then the school headmaster says, I am going to send you for a competition of a district level. And when he reaches to the district level people recognize him that he is doing something very good. He said, oh, we are going to send you on a state level. And when he does good at the state level, then state level said that we will send you to the Asian level. And when Asian level he comes, he said that we are going to send you to the Olympic level. Because the authorities come to know that you have attained that kushalta which can give you a Olympic medal. The same thing applies here also when the Supreme Personality of Godhead says that you are completely without akama, sarva kama, and he is ready to give you everything all your life. I hope you are such a wonderful Bhagavata yourself. So, my dear friends, let me share this good news. The 14 years of our sadhana stali is breaking today. So these devotees, wonderful devotees, Samve Das, Sita Mohan Das, and some more devotees have been giving their life, our Chaitanya Mohan and so many wonderful devotees have given their life. We started our life from these small shed, and now today the time has come that we want to build a very big cultural center there, and for the pleasure of Radha Madan Mohan ji. So this is breaking so that we can lay a cornerstone on 17th of May, and we'd like to do a cultural center there for the pleasure. That's why we are making it all, we are breaking this, and it's little sad, but also very happiness that we are progressing in achieving the vision what we had set 14 years back for this place. And after 14 years, this has come up to this point that now we are breaking this. Until 14 years, till now, we have been able to spend 135 crores for this project. My dear friends, it's all the great hard work of all of us together. I am not single-handedly saying that it's we, it's all the Supreme Personality of Godhead, Sri Madan Mohan Ji. Madan Mohan Ji is doing miracles here. As Vaishnava Angri Prabhu has said, that this is a miraculous place. Only thing, it needs finer intelligence to understand how Lord is doing special mercy on devotees and how we have passed through the journey of 2-3 devotees, Sita Mohan Das, Samve Das,
myself and few more devotees started the journey of this Kharghar temple, and we can see that all of you are sitting in this, and I'm sure we will be sitting also in the new temple in this year. So it's an order from His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj that we should try to open this temple on Vijayadashmi time, that is on 24th of October. So I need your support, I need your sacrifice. Just like when your brother is sick and doctor says, हमको 2 बोतल खून चाहिए, तो अगर आप उसके साथ रिलेट करते हैं तो आप बोलते हैं मैं देता हूं 2 बोतल खून देता हूं ताकि आपका भाई बच सके। इसी तरीके से अगर आपको अपनी संस्कृति बचाना है तो ऐसे मंदिरों का निर्माण होना चाहिए जहां से हमारी संस्कृति का उद्घोष सदैव होता रहे और हम जैसे बद्ध जीवों को आध्यात्मिक जीवन का विकास प्राप्त हो सके। तो आपको भी थोड़ा सा त्याग करना होगा। ये छोटा सा अरसा है, बीच में 4, 5, 6 महीने में हम चाहते हैं कि आप सभी अपना योगदान कैसे भी करें, किसी भी तरीके से करें, and don't shirk from doing this, and I humbly beg you, and this is our request. मंदिर तो बनने वाला है, यहाँ तक तो आ ही गए, जिसने भी मेहनत किया उसको मालूम है किसने किसने मेहनत किया, मगर हम ये अंतिम पड़ाव में उन लोगों को बताना चाहते हैं जिनके बैंक बैलेंस भरे हुए हैं और मालूम नहीं क्या करना है, उन तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए। आइए इस मंदिर के निर्माण में अपने धन को ऑफर कीजिए, अपने धन का सदुपयोग करें, अपने कुटुंब का सदुपयोग करें, अपने कर्म फल का सदुपयोग करें, जिसके अंतर्गत भगवान आपको, अगर आप 1 रुपया दे देंगे भगवान 1 करोड़ रुपया दे देंगे। ये तो पुरानी कहावत है, बॉलीवुड वालों ने बताया। एक गाना था ना, क्या था वो गाना? हाँ, यस यस। तो चलो इस सही में ऐसा ही बाटर सिस्टम भगवान के साथ कर दीजिए ताकि हमारा मंदिर बन जाए और आप सब लोग इसमें शामिल हो जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। At 11 o'clock there's going to be a congregational meet in Anand Vrindavan Hall. All of you should be present. सभी लोगों को वहाँ पर होना चाहिए और जो लोग नहीं आए उनसे भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप सबको फ़ोन करके बुलाइए और ताकि वो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की, निताई गौर सुंदर भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदी। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिल जाए वृंदावन धाम। Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Rama